नमस्कारम। तो आज हम एक्सरसाइज 5 देखने वाले फ्रॉम योर चैप्टर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ योर सीए फाउंडेशन सिलेबस। So I hope you guys are ready with me. So let us start with the question number 1. So before starting this exercise, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि परम्यूटेशन का जो फॉर्मूला है, ओके, परम्यूटेशन का आपका जो फॉर्मूला है, इट इज नथिंग बट एन पी आर विच इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर होल फैक्टोरियल। ये जो फॉर्मूला है ये आपको पता रहना चाहिए। अगर आपको ये फॉर्मूला पता है, इसके कुछ प्रॉपर्टीज है वो पता है, देन ओनली यू कैन सॉल्व दिस एक्सरसाइज। So let us start with the first question. It is very simple question. Okay, given it is, sir, in the question number 1 it is given that 4p3, एकदम सिंपल सी बात है, नथिंग नो रॉकेट साइंस, ऐसा कुछ सा रॉकेट साइंस है नहीं उसमें। तो लेट अस अज्यूम दैट इट इज 4 फैक्टोरियल अपॉन इज n minus 3 द होल 4 minus 3, it is nothing but 4 into 3 into 2 whole upon 1 factorial, which is nothing but 1, so let it be as a 1. When you multiply them, 4 3s are 12, 12 2s are 24. The answer comes out to be 24. The answer is 20. We got this. So in second, it is 4p4. Whenever your r and p are, sorry, r n is equal to r, we will directly take it as n factorial. We will directly take it as n factorial, which is nothing but your 4 factorial in this question. It is 4p4 na, so that's why. So it is going to be 4 into 3 into 2 into 1, which is nothing but, again, the answer will be 24. Okay, so in question number 3, see, the sign is different. If you know that the factorial can be denoted as like this or else like this. The factorial को denote करने के दो अलग अलग तरीके हैं. So here they have applied this one. So it is nothing but 7 factorial. So what is the 7 factorial? 7 factorial is nothing but, so it is 7 factorial. So 7 factorial, so 7 factorial निकालते हैं. Let's see what the answer comes out. 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 is equal to 540. So देखो 540, the option A is my correct option. Okay, I hope you are getting it. The zero factorial, it is a property. Always a zero factorial is nothing but it always comes to be 1, not 0, it's not infinite. Okay, so the zero factorial is always 1. Question number 5. In this question, what they have asked, in NPR, n is always, see, whenever you are taking n, it is always going to be something, the number of some object. Okay, so when you are talking about some number of objects, it cannot be going negative, because we never say that I have n minus 3 balls. Okay, if I will not say that if I am having minus 3 umbrella. So the numbers of the objects cannot be negative. So the n will always be in the form of positive, and again it cannot be in the form of fraction, right? अब इंटीजर्स तो बोल ही नहीं सकते, क्योंकि सर इंटीजर्स में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आता है, तो ये तो बनने नहीं वाला। तो फ्रैक्शन, अब कभी ऐसा तो नहीं बोलोगे कि सर आई हैव 1/4 balls to play, we will not say. Or else I have like half umbrella, we will say no sir, we will not say like that. We will just say like, sir, I have 4 balls, or I have 2 umbrellas, I have 3 raincoats, whatever it might be. But it will be in the form of object where the natural numbers will be existence or whole number will be existence. See, the positive numbers, so it will always come in the form of positive integers. It will always come in the form of positive integers. Okay, so in question number 6, in NPR, the restrictions is, the restriction, sir, restriction क्या दिया इन लोग ने यहाँ पे? The restrictions are like, sir, the very first, see, when you are talking about n objects, whenever you are talking about n objects, the n is always, greater than or equal to r. This is one of the property. That's why I told you, अगर आपने परम्यूटेशन के प्रॉपर्टीज और फॉर्मूले पढ़े नहीं है, तो आप प्लीज वो पहले पढ़ के आओ, फिर आपको ये एक्सरसाइज समझ में आएगी. So the property is that
n is always greater than or equal to r. So the option B is right. In your book I think it is given option C, but there are some kind of printing mistakes, so just go with option number B. So in question number 7, in NPR, NPR is equal to n into n minus r, n minus 1 into n minus 2. It goes on to n minus r plus 1. So they have asked you the number of factors. So it depends upon your n only. Always the number of factors of the NPR, it depends upon your n. Okay. So the number of factors in this question is n. In question number 8, NPR can also be written as, see, we know that NPR का formula क्या है, NPR is equal to n factorial upon so NPR is equal to n factorial upon n minus r दो whole factorial. ये हमारा formula है. But after looking at this formula, I can't see any of this formula it is same. But because the factorial is given in the different sign, जो factorial की sign है वो उन लोग ने change कर दिए. तो आपको बस देखना है कि आपका जो sign change होने के बाद ये जो formula है वो कहाँ apply होता है. So I hope this can be written as n factorial is upon n minus r the whole factorial. So the A option is the right option. Okay, in question number 9, look, it is very simple question. They have asked you to find the value of n. आपको क्या दिया है, आपको दो चीजें दी गई है. एक तो आपको दिया गया है np4, okay, np4, and the second they have told that it is equal to 12 into np2, it is equal to 12 into p2, and we have to find the value of n. So how to find the value of n? It is very simple. Just what you do, take the options. In this cases, इन केसेस में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऑप्शंस को लेके आप वैल्यूज पुट ऑन करोगे और आप सॉल्व करने को ट्राई करोगे. सो इन दिस क्वेश्चन लेट अस टेक द फर्स्ट वैल्यू, इट इज -1. चलो सर, अभी अभी थोड़ी देर पहले हम लोग ने देखा था दैट n इज ऑलवेज अ पॉजिटिव इंटीजर. n क्या हमेशा पॉजिटिव इंटीजर है. तो सर ऑप्शन ए तो बनता नहीं है क्योंकि ऑप्शन ए नेगेटिव में है. तो चलो ऑप्शन बी डाल के देखते हैं. इट इज 6p4, right? It is 6p4. 6p4 can be written as 6 factorial upon 6 minus 4 the whole factorial, right? It is equal to 6 into 5 into 4 into 3. If I am not wrong, 2 factorial can be get cancelled. I'll show you once, then I will not show you one. So it is 2 factorial, right? So 2 factorial and this 2 get cancels. What is the remainder? So let us calculate it. 6 5 into 4 into, it comes out to be 360. 5 360. क्या आ गया आपका ये वैल्यू? देन नेक्स्ट सॉल्व करते हैं. तो इट इज 12 इंटू एन पी टू, हम लोग ने 6 लिया है तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 minus 2 the whole L is going to be 6 into 5, because 6 minus 4 is 6 minus 2 is 4 factorial, so 4 factorial will get cancelled. So remainder is this, and this is going to be get multiplied by 12 as it is given in the question. So what is the 6 into 5 is 3 is multiplied by 12, comes out to be 360. वाह सर, आंसर आ गया. So it is going to be 360. सर आंसर इक्वल आ गया. So the correct option is B. So the correct option आपका जो इस क्वेश्चन में करेक्ट ऑप्शन जो था वो क्या था? B था. Okay, now question number 10. So in question number 10, it is directly given that again the same question, we have to find the value of n. I will be not solving this question right now. You have to solve it by yourself. It will be a whole kind of homework for you. So I will just explain you. So it is given that the np3 upon, it is given to the ratio, that's why I am writing it in the form of upon np2, which is equal to
3/1। तो अल्टीमेट क्वेश्चन इज कि आपको जब आप ये सॉल्व करोगे NP3, जब आप NP3 सॉल्व करोगे ऑप्शंस को लेके, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? 3 आना चाहिए। और जब आप NP2 सॉल्व करोगे तो आपका आंसर 1 आना चाहिए। सो इट माइट बी एनी वन ऑप्शन फ्रॉम दिस अप 3 ऑप्शंस। अगर नहीं आता तो नन ऑफ दिस तो है ही हमारे पास। ओके, बट आता है तो आपको वो ऑप्शन टिक करना। सो दिस विल बी होमवर्क फ्रॉम माई साइड। आई वुड लव टू सी वेदर यू आर सॉल्विंग इट और नॉट। और अगर आपको नहीं आता तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप मुझे डाउट पूछ सकते हो। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 11 इज ऑल्सो द सेम क्वेश्चन। आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको m और n की वैल्यू ऑप्शन में तो ऑलरेडी दी गई हुई है, तो आपको फैक्टराइजेशन इक्वेशंस लगा के सॉल्व करने की ज़रूरत है नहीं। अगर आपको ऑलरेडी ऑप्शंस में दी गई है वैल्यू, तो आपको बस वो वैल्यू पुट ऑन करनी है वहाँ पे, और आपको परम्यूटेशन के फॉर्मूले से आपको वैल्यूज़ निकालनी है। अगर आपके वैल्यूज़ आ जाते हैं देन योर आंसर इज़ राइट। अगर आपके वैल्यू नहीं आते देन योर आंसर इज़ रॉन्ग। तो आप ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, इन तीनों में से वैल्यूज डाल के देखो कि आपके तीनों में से ऑप्शंस कौन से राइट आते हैं। तो whichever option is right, you can tick it that, and the options are not getting it, then you can go for the option number D, which is none of this. So I think this is also same kind of question, so I would like to give this also homework for you guys. So question number 12 is already the same like what we have solved in question number 9. In this question, they have just asked us to find the value of n, and in question number 12, they are asking us to find the value of r. So it is kind of similar. आपको वापिस से एक ही स्टेप करनी है। आपको ऑप्शंस में जो वैल्यूज दी गई है वो आपको r की जगह पे डाल के देखनी है आपका आंसर आता है कि नहीं। अगर आपका आंसर आता है देन द वैल्यू ऑफ r इज राइट। अगर आपका आंसर नहीं आता देन योर वैल्यू ऑफ r इज रॉन्ग। So this will be also homework from my side. क्वेश्चन नंबर 13 सेम, जो आप क्वेश्चन नंबर 11 में जैसे आप करोगे सेम टू सेम आपको क्वेश्चन नंबर 13 में करना है। तो दिस विल बी ऑल्सो होमवर्क फॉर माई साइड।